थैंक यू कि आप सब यहाँ आए, आपने ऐसा रिस्पांस दिया हमारे ट्रेलर को, जो हम 2-2.5 साल से इतने मेहनत से काम कर रहे, वी वर्क फॉर दिस काइंड ऑफ रिस्पांस, फॉर दिस काइंड ऑफ लव। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका। आई थिंक आई गो बैक टू द फर्स्ट टाइम जब संदीप ने मुझे ये कहानी सुनाई थी इस फिल्म की। ये करीबन 3.5 साल पहले सुनाई थी, 3 years बैक। एंड आई रिमेंबर जब उन्होंने नरेशन ख़त्म किया, मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं सीधा अपने बाथरूम में गया और मैं अपने आप को शीशे में देख रहा था, थिंकिंग कि यार ये क्या सुना दिया इसने, मैं कि कर पाऊंगा कि नहीं। इट वाज एक्चुअली, आई डोंट यूज द वर्ड डार्क बिकॉज डार्क हैज़ अ वेरी नेगेटिव मीनिंग टू इट। बट ये ऐसा एक किरदार, ये एक ऐसी कहानी, एक ऐसा दुनिया था जिस जो मैंने पहले कभी सुना नहीं था। मैं संदीप का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। आई लव्ड अर्जुन रेड्डी, आई लव्ड कबीर सिंह ऑल्सो। जब मैंने अर्जुन रेड्डी देखी, ये कबीर सिंह की अनाउंसमेंट से पहले जब मैंने देखी थी, मुझे लगा कि इससे बेटर लव स्टोरी कोई बन नहीं सकती। और फिर संदीप ने फिर से वही लव स्टोरी कबीर सिंह में बनाई और मैंने कहा कि मैं चैलेंज देता हूँ, ये हिट हो ही नहीं सकती। क्योंकि जो अर्जुन रेड्डी ने जो कमाल किया था, जो परफॉर्मेंसेस थे, जो म्यूजिक था, वो रिक्रिएट हो नहीं पाएगा। बट ही डिड इट अगेन, एंड व्हेन ही ऑफर्ड मी दिस फिल्म, ये मेरा सौभाग्य था। आई वाज ग्रेटफुल कि फिल्म मेकर लाइक हिम। हंस क्यों रहे हो आप? कुछ ज़्यादा हो गया? अच्छा, आई थिंक लाफिंग ऑन द वर्ड सौभाग्य, बट या आई वाज सो ग्रेटफुल दैट आई वाज गिवन दिस अपॉर्चुनिटी। ज़्यादातर लोग मुझे ऐसे किरदार में नहीं देखते। बट लिसन, मैं बोलते जाऊँगा। आई जस्ट वांट टू से दैट थैंक यू सो मच। वी रियली रियली हम सबको बहुत अच्छा लगा कि आपने ऐसा रिस्पॉन्स दिया। इट रियली इनकरेजेस अस। और मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि जो आपने ये देखा, ये सिर्फ 5% है। फिल्म में इससे बहुत 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 ज़्यादा है। सो प्लीज़ डू कम टू द सिनेमाज ऑन 1 December। Ranbir Kapoor, ladies and gentlemen. Bobby sir, this one's for you. Of course, we know कि कितनी मेहनत जाती है when you do ऐसा एक रोल, लेकिन आंखों से बड़ा सब बोल रहे हैं. Be it the teaser or here. There is so much that your eyes are saying. आपके दिमाग में क्या चल रहा था? How emotional was this journey for you? कितना सारे लोग। मैं सबसे पहले संदीप को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जिन दिनों मैं जो मेरे करियर की सिचुएशन थी, मुझे ऐसे रोल कभी मिलना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना कमाल का कैरेक्टर कभी मुझे मिल सकता है। तो एक दिन मुझे संदीप का मैसेज आया सेइंग संदीप रेड्डी बंगा, आई वुड लाइक टू मीट यू। तो मैंने बोला यार ये सचमुच में संदीप ही है, कोई और है, मस्ती तो नहीं कर रहा कोई। तो मैंने पता किया, बोलते नहीं तो संदीप ही है। तो मैंने बोला यार फ़ोन लगाओ फटाफट। फ़ोन लगाया एंड मैंने बोला चलो मिलते हैं। एंड वी मेट एंड मुझे ये आकर एक फ़ोटोग्राफ दिखाते मेरी। इनके पास एक फ़ोटोग्राफ थी जब मैं ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रहा था, पर मैं सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेलता था। तो वहाँ मेरी एक फ़ोटो खींची गई थी जहाँ मैं इससे दूर कहीं देख रहा हूँ। तो मैंने मुझे ये फ़ोटोग्राफ दिखाई और कहा कि मैं आपको इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि आपकी जो फ़ोटोग्राफ है, इसमें जो आपका एक्सप्रेशन है वो मुझे चाहिए। एंड आई से चलो बेकारी के दिन काम आ गए फोटोग्राफ। तो वैसे मुझे फिल्म मिली, सो आई लव यू संदीप फॉर रियली रियली गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड व्हाट डू आई से, आई जस्ट हैव टू से दैट वर्किंग with this amazing cast, and I mean I'm a huge fan of this man out here. He is, I'm not saying, मैंने इंडस्ट्री में बहुत लोगों के साथ काम किया है और सारे स्टार सुपरस्टार लोग हैं, लेकिन इतना हम्बल, इतना डाउन टू अर्थ इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं हमारी इंडस्ट्री में, और वो उनमें से एक है। और जब मैं इससे काम कर रहा था तो मैं बस इसकी आंखों में देख के खो जाता था। He was so mesmerizing as an actor. So I'm really grateful to be part of Animal, and हाँ बहुत मेहनत करनी पड़ी, ये सब बेयर बॉडी करनी पड़ी हमको। पर I'm glad आप लोगों को इतना अच्छा लगा, आपका रिस्पॉन्स मैं सुन रहा था और फील कर रहा था इस वक्त जब चल रहा था प्रोमो। सो लव यू ऑल फॉर बीइंग हियर टुडे, एंड प्लीज 1 December in theaters. Thank you so much. Thank you so much sir for sharing that. Of course, आंखों आंखों का खेल है, जैसा मैं यहाँ बता रहा था, और उससे याद आया आंखों आंखों में बहुत कुछ हो रहा है। रश्मिका, you and of course this. So lovely, thank you so much Rashmika. As I said, आंखों आंखों में बहुत कुछ हो रहा है. Of course I have a serious question for you, लेकिन उससे पहले one good quality of this man जो लगता है हर किसी को सीख लेनी चाहिए आरके से. सीख लेनी चाहिए.
I think RK na. Hi everyone, first of all. Yes. कैसे हैं आप? सब ठीक? All good? Eight and all, no? Okay. Yeah, okay. मैं ठीक हूँ. Thank you, how sweet. कर लो पर्सनल वन ऑन वन है हम तो ऐसे ही खड़े हैं जी Sorry for the Please, answer for your question. I feel like one thing is he makes it very easy for his co-actors rather than I think himself on set. Because the first question I think he came and asked me was, do you want to rehearse before the scene or do you just like rolling directly? And that was a question that I was never asked before because generally, till I started working with sir, Ranbir, sir. So, like the first, before I started working with Ranbir, I used to just be like, okay, sir, we're ready, let's roll. And suddenly, here's this man who's come and asked, let's do one-on-one rehearsal and then we'll start rolling. And I realized the performance when you like rehearse with your co-actor comes so naturally and so beautifully. The chemistry builds, the rapport builds, the conversations get better. So I think that is one thing. Like I'm speaking very professionally, so it's one thing that I've learned from Ranbir sir. Right, right. There's this beautiful father son relationship, but उसके अलावा वो दुश्मनी भी दिख रही है, violence भी दिख रहा है जैसा सर ने वादा किया था. But वो scene जो हमने अभी यहाँ पे देखा, वो कितना कितना हिला के गया. Would you say that this is the best of Rashmika जो हमने अभी तक देखा है? Yes. है? Yeah. She said it, ladies and gentlemen. I The think- breaking news. Sir, I really have to give it to Sandeep, sir. Yes. I really have to give it to Ranbir because I don't think I have seen myself doing a character like this. And Ranbir is such an intense performer. So if you have to share a screen with him, Right. so matlab you have to be good enough. And I didn't think I was good enough, but I think Sandeep got it out of me. So all credits goes to this man here and this man here. Of course, we love you, Rashmika. See, सबकी तरफ से मैं कह दे रहा हूँ चांस पे डांस. Thank you so much. तू सब बोरिंग सवाल कर रहा है फिर वो असली कंट्रोवर्शियल आंसर्स इधर से आने वाले आ रहा हूँ, मैं वही आ रहा हूँ. So, Sandeep sir, thank you so much. Rashmika, Sandeep sir, this one's for you. जैसा आरके ने बोला, अब जरा कुछ मसाला लाते हैं. आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हमारी मुलाकात हुई थी, आपकी पहली हिंदी मूवी थी, है ना, कबीर सिंह विद टी सीरीज, तब आपने कहा था अभी तुम लोगों ने देखा नहीं है वायलेंस. उसके बाद भी हमारी ये बातचीत हुई थी. तो अब ये उसका बदला निकाला गया है, लाइक यू आर लाइक ऑल आउट ओवर देयर, और दिस इज जस्ट द बिगिनिंग अगेन. नहीं वो अपना प्रेस मीट नहीं था, वो दूसरा प्रेस मीट था. सर हमारी भी बात हुई थी सर. एंड गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी एंड थैंक यू सो मच. यू ऑल लाइक द ट्रेलर. No, this more than the physical violence, it's mental violence in the film. Right. More internalized violence. राइट. लास्ट टाइम सर ऐसा कुछ मारधार नहीं हो रही थी, बट स्टिल देयर वर सो मेनी फायरवर्क्स. यहाँ तो प्रॉपर होने वाला है. सो टॉक टू अस अबाउट दैट एंड योर जर्नी विद एनिमल, बिकॉज ये इतने दिन से चल रहा है. पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस. द एक्टर्स उनको हर जगह बस यही पूछा जाता है. सो यू टेल अस अबाउट योर जर्नी एंड हाउ वाज इट फॉर यू. लाइक एनिमल आपके लिए क्या थी? It's more than 3 years. I'm into this story, into the screenplay, into the characters, and it's a long journey. We had great time. We had great actors. Working with Ranbir Kapoor is for a second-time filmmaker. It's actually it's a big thing to get an opportunity. नहीं इनको ऐसा लगता है, but वो बहुत बड़ी बात है. सबको पता है ये बात, right? For a second-time filmmaker to get a chance with Ranbir, and I was very excited when I got to know that we'll be working, and once I started narrating the story and the rest fell in place. So yeah, उसके बाद था जर्नी, लंबा जर्नी. और कुछ पूछो मैं बोलता हूँ. मतलब सर कुछ बताओ मसाला. सर सबसे ज्यादा कौन आपको था? असली असली आप बताओ. मसाला वहां से मिलेगा. हाँ, अभी आते let's open हैं. it. we'll come to that मसाला. मुझे थोड़ा हद में रहना पड़ता है. भूषण सर, this one's for you. One of the strongest pillars of Indian cinema, as I said. Of course, that goes really well with you. Of course, यहाँ sitting with this team, the kind of response that you've got, और इतना सारा जो buzz already create हो गया है एनिमल को लेके, what do you have to say, sir? Thank you very much, everyone, for the great response. Yesterday, we got a great response from the Bombay press, and same thing we are getting here. And thank you very, very much for that. As Sandeep rightly said,
we have given our 3 years, means all of us, hard work, especially means Ranbir. We have seen him in so many characters in this. Everybody has worked great. Bobby sir and Rashmika and the entire cast, and obviously Anil sir means he has done a great job in the film. So me as a producer, very happy with the film. I have seen the film, I think thrice, and it's mind blowing. Means I can't thank Sandeep to make this film with us. And we have worked in Kabir Singh before. Had a we've got great love from you on that film. So we are expecting the same love on this film on 1st of December. Thank you so much, sir. Thank you so much, Pranay sir. Quickly, if you have to, add something to that as a producer of Animal, and of course the kind of response that we've just got. Thank you, Delhi. We got amazing response from Bombay yesterday, and I see that today in Delhi. So we are looking forward for the movie. We know that movie is going to hit, but अभी कितना बड़ा hit होगा, time will decide. And I'm very happy working with RK, Bobby sir, and also Rashmika. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much. And as Ranbir said, अब आएंगे वो सवाल तो अंदर के एनिमल को चगाइए. And over to you. चलिए. कहाँ से? Where are we taking the first question from? संदीप सर, आप अपना कुर्सी यहाँ ले आओ. यस, हम लोग को माइक की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही जोर से बोल दो. हाँ, हाँ. जी. You know, when संदीप ने मुझे कहा कि for the antagonist part he's going to cast Bobby sir, मुझे याद है कि जब बरसात फिल्म रिलीज हो रही थी, और जो भी बॉबी सर ने उस फिल्म के बाद जो भी किया, आई रिमेंबर वॉट एवर ही यूज्ड टू डू ऑन स्क्रीन. अगर जो उनके वो ब्लू कलर के जो चश्मे थे, द वे यूज्ड टू वेयर हिज वाइट शर्ट एंड जीन्स, उनके जो ही यूज्ड टू वेयर अ पर्टिकुलर डीजल ब्रांड, उनके जीन्स पहनते थे. मैं हमेशा जहाँ भी जाता था मैं लिखता था बॉबी सर ने ये पहना था, तो वो सेम चीज़ शॉपिंग करता था. सो आई हैव रियली ग्रोन अप वॉचिंग हिम. वीव मेट सोशली, बट जब इनके साथ काम करने का मौका मिला, आई थिंक वी बोथ आर वेरी सिमिलर पीपल. वी बोथ आर, इफ आई कैन से, वेरी फैमिली पंजाबीज. तो एक इंस्टेंट कनेक्शन हुआ. आई रिमेंबर कि हम लंदन के -3 -4 डिग्रीज पे शर्टली शूट कर रहे थे फॉर अराउंड 12 to 15 days, बट देयर वाज सो मच वार्मथ बिटवीन अस कि हमें ठंड ही नहीं लगी. सो आई थिंक ये ऐसा रिश्ता है दैट आई विल रियली cherish for all my life. So thank you Sandeep sir for bringing us together, and thank you Bobby sir for being part of Animal. Love you Ranbir. हेलो दिस इज सीमा धवन. बॉबी सर को भी बोल रहे हो. नहीं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैंने मतलब रणबीर मुझसे बहुत छोटा है, तो जब मैं कभी बाहर जाता था इतना भी छोटा नहीं हो. लेकिन मुझे आज भी याद है, जब भी मैं कहीं गया हूँ कोई पार्टी पर या कहीं भी, तो मैं रणबीर से मिलता था, हमेशा बहुत प्यार से मिलता था, बहुत रिस्पेक्ट देता था. लेकिन मैं जब इसको हमेशा नोटिस करता रहता था कि इसमें एक जो स्टाइल है, इसकी पर्सनालिटी है, और जब ये डांस फ्लोर पे जाता था तो देयर वाज नोबडी बेटर देन हिम ऑन द डांस फ्लोर. एंड आई यूज्ड टू जस्ट थिंक दैट वन डे व्हेन ही कम्स ऑन स्क्रीन ही इज गोइंग टू वेरी kill it. He's going to be the best. And I guess here I am working with Ranbir, my favorite actor, and it was wonderful working with him on the first day. We shot together in London, and it was just amazing. I mean, I'm telling you, I felt so overwhelmed working with him. It was just some of the most beautiful moments of my life working with Sandeep, Pranay, Ranbir, and the whole unit. It was just the day when my shooting got over, I was like, I got up in the morning feeling sad. I said, अरे shooting खत्म, अब मैं इनसे इतने हर दिन ऐसे नहीं मिल पाऊंगा, पर हमने at least spend किए वो 12-15 दिन साथ में, so I'm always going to cherish those moments with me.
आई थिंक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि ये मेरे हिसाब से इतने ओरिजिनल राइटर है, इतने ओरिजिनल डायरेक्टर है, इनका कोई भी मोमेंट, कोई भी सीन ऐसा आपने कभी लाइफ में कभी देखा नहीं है, कभी महसूस नहीं किया है। हम कितना बात करते थे सेट पे कि ये सब संदीप के पर्सनल लाइफ में ये सब हुआ होगा, बिकॉज ये कहाँ से लाता है ये सब आइडियाज। बट it's really been it's been too inspiring for artists like us to get a filmmaker like him, जो इनकी जो आवाज़ है, इनकी जो सोच है इतनी ओरिजिनल है कि एक्टर्स हम मरते हैं कि ऐसे फिल्म पर फिल्म पे काम करें, ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करें। सो बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। Hi, hi. थैंक यू उदय। I think Uday, darkness is, like I mentioned earlier, darkness is a very misused term, so I don't want to use the word dark. But yes, it's the most complex character I've ever played. People usually see me in a particular way as the boy next door, chocolate boy, romantic hero. I don't know what he saw in me that he, offered me this part. But इसने इतने रंग दिए इस कैरेक्टर में, मुझे नहीं, हर कैरेक्टर को। I think ऐसा राइटर है कि he writes for every character and he gives them a character. He gives them a plethora of emotions, of complexities, and that is very exciting to to portray. The switching off, switching on part was very important to me because when I was starting this film, I became a father. Raha was born, so I was going on set and doing all these things, and then going home and seeing my daughter. So it was a bit surreal. But when you're inspired, आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है। ये फिल्म हमने करीबन 100 दिन में ख़त्म कर दी एंड आई थिंक बहुत जल्दी ख़त्म हुई है बिकॉज पता नहीं लगा कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ फिल्म एंड दैट ओनली हैपेंस बिकॉज यू आर वर्किंग विद इंस्पायर्ड पीपल एंड संदीप इज डेफिनेटली ऑन टॉप ऑफ द लैडर वेयर इंस्पायर्ड पीपल आर कंसर्न्ड। Hi. Hello. We'll come to you. We'll come to you. Hello. I'll come Hello. to you. This is अच्छा Seema सब Dhawan over लोग here. अच्छा सब लोग सर Okay. सर हेडमास्टर है ये बोलेंगे Alright. कौन? Hello, this is Seema Dhawan over here from Retropop Lifestyle Magazine. So my question is from welcome to the entire team. My question is for Bhushan sir. How would you describe Animal? And Ranbir, what would you say about your character in it? See, it's a full commercial film with everything. You have music, you have performances, you have drama, you have action. Everything what a person need to entertain themselves while watching a film. So it has everything in it. बेसिकली अडल्ट रेटेड कभी खुशी कभी गम। That's a nice word, correct? हेडमास्टर हेडमास्टर Ranbir, I asked you one question. What would you say about your character in it? My character, ma'am, it's pretty now. The trailer's out, so you can see what he is. We would like to build some mystery around it. It's just 1 week to release. But I think if I had to describe this story in a line, it would be about a man who goes to any lengths to protect his family. That's what the core of this film is. आप लोग कोरस में बात करते हो? Yes, of course. But should we finish this and then फिर आ जाओगे? अच्छा, लास्ट में आप आ जाओगे 100%. Chalo, next. Deepika. I think thankfully मैं detached किस्म का इंसान हूँ. So I know what work is, I know what personal life is. So I never take my work home. You have to switch off as an actor. You have to have that ability because it's not fair for your loved ones. आप किसी कैरेक्टर में घुसी और घर आके मैं अगर इस इंसान के जैसे बिहेव करा था, मेरी बीवी मुझे मारती है कि क्या हो गया तेरे को. So you have to have that. At the end we all are professionals. We have to develop some skills and you have to work with those skills. Thank you. वो टॉक्सिक, वो सब टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी.
मैं कुछ चेंज नहीं किया बिकॉज कबीर में प्रीति वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर या उससे ज़्यादा गीतांजलि इज इम्पोर्टेंट तो कुछ चेंज नहीं हुआ एज इट इज हुआ कुछ फर्क नहीं पड़ा